हेलो 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 मेरे इंटरनेट के दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल सरदार चेल्स। आज ऑनेस्टली आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट मैं इतना एंथुजियास्टिक नहीं था वीडियो बनाने के लिए। आई एम लिटिल लो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट यस्टरडे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो कुछ तुम्हारा काम है सब कुछ कर दो। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो व्हिच यू कैन सी बाय क्लिकिंग दिस थिंग हियर। ऑल्सो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिटिल प्लग इन फॉर माई चैनल। जैसे हमको पता ही था विद एवर्टन, दे आर इन द टॉप 5 अक्रॉस यूरोप फॉर द बेस्ट डिफेंस। पिछली 4 प्रीमियर लीग गेम्स में द नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय देम इज 0। देयर सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ तारकोस्की एंड ब्रेंथवेट हैज बीन super solid. In the midfield, Gay, Mangala and Doucouré, they are also defensively very good. So all in all, their defense has been really solid and they have not been leaking goals at all. Now to start with, let's talk about our lineups first. In goal, we had Robert Sanchez. सेंट्रल डिफेंस में देयर वाज लीवाई कोलविल एंड टोसन, क्योंकि बादियाशील और फोफाना दोनों लॉन्ग टर्म इंजरीज में आउट हैं। लेफ्ट पे वी हैड मालो गुस्तो प्लेइंग बिकॉज मार्क कुकुरेला इस गेम के लिए सस्पेंडेड है, और ऑनेस्टली वी मिस्ड मार्क कुकुरेला इन दिस गेम बिकॉज ही इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम। ऑन द राइट साइड वी हैड एक्सेल दिसासी, और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आई थॉट रोबर्टो विएगा कुड हैव स्टार्टेड ऑन द लेफ्ट और गुस्तो को उसी की पोजीशन में राइट बैक में खिलाना चाहिए था, बिकॉज विएगा हैज प्लेड लेफ्ट बैक बिफोर इन द कॉन्फ्रेंस लीग और वो अच्छा खेलता है। एंड प्लस एक्सेल दिसासी से आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, he kind of makes mistakes a lot. So that's why that was what I thought कि Roberto Viega could have started on the left and Malo Gusto could have played right back. Midfield में Enzo and Caicedo were there. Perfect. No changes required there at all. In attack, in the center, we had Cole Palmer, perfect. On his left side, Jadon Sancho. And on the right, Pedro Neto started for Madueke, which is fine. A little rotation should be there. And as the striker, we had Nicholas Jackson. You know, with the injuries, the suspensions, and juggling players between the two competitions, the Premier League and the Conference League, आई थॉट जो एंजो ने लाइनअप पुट आउट किया था वाज गुड इनफ। एक दो चेंजेस जो मुझे इन माय ओपिनियन लगे वो मैंने बता दिए, बट अदरवाइज नो कंप्लेंट्स, अ गुड स्टार्टिंग लाइनअप टू गो विद। द फर्स्ट हाफ स्टार्टेड रियली वेल फॉर अस, वी वर प्लेइंग वेल, वी वर क्रिएटिंग चांसेस। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट गोल जो हमारा हुआ वाज अ ब्यूटिफुल बैकहील बाय निकोलस जैक्सन टू कोल पामर। He went towards the goal, created some space for himself, but he failed to test Pickford and hit his shot a little wide of the goal. Then there was a chance for Pedro Neto where he cut in from the right side and shot at the goal, but straight in the hands of the Everton goalkeeper Pickford. Then in the 24th minute, it was our best chance to score in the game. हमारी हाफ से स्टार्ट हुई ये मूव वेयर Caicedo and Neto were amazing. Caicedo stole the ball, it came to Neto, Neto held the ball really well. दो players उनके एवर्टन के were trying to get the ball, but he held the ball really well. Passed back to Caicedo, ran towards the goal. Caicedo passed the ball back to Neto, and on the overlap, there was Cole Palmer, which Neto saw. He passed the ball to Cole Palmer, right side से एक beautiful grounded pass by Cole Palmer straight into the foot of Nicholas Jackson, but Jackson just hit the ball right where Pickford was and he saved it. जो रिकोशे हुआ उससे बॉल मालो गुस्तो के हेड पे आई, एंड अगेन द सेम थिंग जो उसने आर्सेनल गेम में किया था, he headed the ball over the goal. कोई यार मालो गुस्तो को सिखाए भाई हेडिंग और के बॉल को नीचे करना होता है, गोल यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे। दैट वाज आवर बेस्ट चांस टू स्कोर एंड निकोलस जैक्सन शुड हैव स्कोर्ड देयर एंड इट शुड हैव बीन 1-0, बट वी फेल्ड टू टेक दैट चांस। देन आफ्टर दैट वी हैड दिस वन कॉर्नर where the corner skipped all of the defenders Everton ke, and it straight came to Nicholas Jackson on the far post, and bhai sahab, he headed the ball right into the post. I mean, come on yaar, this is where we need to take the chances that we create. The only chance that Everton had in the first half was from Mangala. उसने outside the box से एक long range shot लिया, which was actually going into the left bottom corner of the goal. But Robert Sanchez, man, I think उसने मेरी कुछ बातें सुन ली है, because he's been proving me wrong since I've been giving him gullies. क्योंकि उसने क्या save किया है. It was a sure shot goal and it was low, so he went low and he saved us from going 1-0 down. And that was it for the first half. The second half, it started crazy for Everton. In the 48th or 49th minute, I think, Jack Harrison from the right side, he was free. Malo Gusto को उसने beat कर दिया था and he was running straight onto the goal, one on one with Sanchez. He shot and Sanchez again.
आई मीन कम ऑन, आई लव दिस गाय नाउ। मेरा सारा ओपिनियन इसके बारे में चेंज होता जा रहा है जिस तरीके से ये खेल रहा है। Sanchez saved us again from a sure shot goal. He was one on one with Jack Harrison and he saved it. बाकी सेकंड हाफ में एंजो ने एक और शॉट लिया था फ्रॉम लॉन्ग रेंज व्हिच वाज राइट इन द ग्लव्स ऑफ पिकफोर्ड. इट डिडंट ट्रबल हिम. Then there were a few chances here and there, nothing major. The game got a little stale and it was being played within the midfield. Now in the 75th minute, Everton had their best chance to score against us. आई डोंट नो गोल कैसे नहीं हुआ, मैं बताता हूँ. राइट साइड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉस आया जो रॉबर्ट सैंचेज पुट हिज हैंड टू एंड सेव्ड. आई डोंट नो, अगर वो हाथ नहीं लगाता तो सीधा किसी एवर्टन प्लेयर के हेड पे जाना था, बट इट फेल टू एन एवर्टन प्लेयर ओनली, एनजाई, एंड ही शॉट फ्रॉम आई थिंक 2 or 3 yards from the goal. But who was there to stop it? Tosin. Tosin came in like a bulldozer and he stopped that. अगर वो वहां पे नहीं होता तो I'm pretty sure ये गोल होना ही होना था. Now this made me really nervous क्योंकि एक तो गेम ही ऐसी थी, Everton being defensively very solid and it was a sketchy affair. एक बेकार सा गोल इधर उधर हो सकता था, और because अगर हम जीत जाते तो even though for a little bit, because Liverpool still had to play their game, हम for at least 1 hour we would have been top of the table, and top of the table after 3 years. पिछले 3 साल में हम फर्स्ट पोजीशन पे आए ही नहीं है, तो ये चांस थी हमारे पास, and that's why I think I speak for all Chelsea fans when we really wanted to win this game. इसके बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं. Neither Everton scared us with any more attempts nor Chelsea had any more concrete attempts, and the match ended in a draw. Now in the game, Everton were getting a lot of luck on the left side. Malo Gusto was getting beaten by Jack Harrison in the first half and Lindstrom in the second half. और वो obvious है because it is not his preferred position. Malo Gusto usually plays right back, but he was playing left back because Marc Cucurella was suspended. So समझ आता है कि he was getting beaten, but it was not expected. मुझे लगा था Gusto will hold his own. ऐसे मैचेस में पता है क्या होता है, whatever chances that we make, whatever chances we have, we should have been clinical. We should have taken those chances. जो निकोलस जैक्सन को 2 चांस मिले, जो पामर का एक शॉट वाइड गया, आई थिंक अगर वो क्लिनिकल होते उन चांसेस में तो the game would have been different and we would have been in the lead in the first half only, and then we would have put more pressure on Everton. We played this game really well. It wasn't like कि हम बेकार खेले or we were bad, but we just didn't kill the game when we had the chance to do it. And Everton were being Everton. They were solid in their defense. They were not letting us pass by easily. They contained Palmer beautifully. एक time पे 3 players mark कर रहे थे Palmer को, and they were not letting him get space. And they really scared us with their 2 chances. The one that fell to Njai and that shot by Mangala. They were really good chances and they could have also scored there. So the match ended in a draw and I was kind of disappointed because मुझे उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे. But then I sat down to watch the Liverpool versus Spurs game. I mean, come on, Liverpool doesn't look like they are going to slip up. They look very tight and they look like scoring every time they make an attack. They destroyed Spurs. Liverpool was being Liverpool and Mo Salah was being the legend that he is. Spurs were being Spurs. They were absolutely shit. So all in all, it was a very okay weekend for us because हमने points drop किए. Arsenal जीत गई 5-1 against Crystal Palace, जो मुझे लग रहा था कि I was rooting for Crystal Palace. Obviously, Crystal Palace could have, given them a scare, but they lost 5-1 to Arsenal. So Arsenal won their game, Liverpool won their game, and now the situation of the table is such कि हम Arsenal से तो 2 points clear हैं on second place. Arsenal is still third. But Liverpool now is on 39 points with 1 game in hand, and we are at 34. So at Christmas, our position in the table is not bad at all. अगर यही चीज को हम last year से compare करें with Mauricio Pochettino, we were 12th at this time. तो उससे तो बहुत बेटर है यार. Now my expectation is that only if Liverpool slip up a few games, they either draw a few games or they lose a couple of games. And when this happens, हम लोगों को capitalize करना है. We can't lose our games. We can't afford to drop points if we want to mount a challenge. So let's talk about who was the man of the match for me in this game. It was the one and only Robert Sanchez. He continues to impress me. He made 2 amazing saves. They were game-saving saves. One from Jack Harrison, one shot from Mangala, and then that close shot from Njai. He was very good in this game. And I think if we came out with a draw, it is all because of him. So अब transfer window is only 7 days away. January 1st से transfer window खुल जाएगी.
तो उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज दैट इज बिन फ्लोटिंग फॉर ट्रांसफर्स आउट ऑफ चेल्सी एंड इनटू चेल्सी, तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे डिस्कसिंग पोटेंशियल ट्रांसफर्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि एंजो ने बोल ही दिया है कि देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु आर नॉट गेटिंग द मिनट्स दैट दे वांट एंड दे माइट लीव इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। इसमें बातें जिनकी हो रही हैं, चिलवेल का तो एक्सपेक्टेड ही है, वो पता नहीं कितने महीनों से बस बैठा हुआ है, उसको तो बेंच पे भी जगह नहीं है, तो चिलवेल का तो अच्छा ही होगा दैट ही लीव्स एंड ही गेट्स द मिनट्स दैट ही डिजर्व्स एट दिस पॉइंट इन हिज करियर। देन कार्नी चुकुमेका का है, ही आल्सो माइट लीव ऑन अ लोन। एंकुंकू का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मिनट्स इन द कॉन्फ्रेंस लीग और उसको हमारे स्क्वाड का एक पार्ट भी फील कराया जा रहा है, एंड ही इज स्कोरिंग एंड ही इज गेटिंग गुड numbers for his goals, but I don't know why he wants to leave, क्योंकि there are rumors that he might leave for PSG. So that's it for my review of the Everton and Chelsea game, guys. Do not forget to like, share, subscribe, comment, all those things. अपने friends में फैलाओ, Chelsea fans को बताओ, सब कुछ करो, and I'll see you in the next video. Till then, cheers, keep the blue flag flying high.